Take it. If you won't give it to me, I'ma take it. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद बिलाल मसूद। मैं पहले फ़िटनेस रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता था और मैंने बहुत सारी वर्कआउट की वीडियोस और वर्कआउट प्लान्स के रिलेटेड वीडियोस अपलोड की थी, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से हुआ इस तरह के मैंने वर्कआउट छोड़ दिया जॉब की वजह से और पढ़ाई की वजह से, इसलिए वीडियोस मैं कंटिन्यू नहीं कर सका। लेकिन इंशाल्लाह अब मैंने दोबारा स्टार्ट की हैं वीडियोस और डिफरेंट प्लेलिस्ट। एक प्लेलिस्ट होगी जिसमें मैं वर्कआउट की वीडियोस भी अपलोड करूँगा, एक प्लेलिस्ट होगी जिसमें डिफरेंट व्लॉग्स होंगे डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड, और जो थर्ड वन होगी उसमें ये होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो उनसे रिलेटेड मैं थोड़ी सी वीडियोस रिव्यू करके उसमें से जो एक कोई वीडियो अच्छी होगी, जैसे कि आज का टॉपिक है तो इस टाइप की वीडियोस मैं लेकर आऊँगा। जिस तरह के आपके क्वेश्चंस होंगे, जो टॉपिक्स आप मुझे सजेस्ट करेंगे कि इसके बारे में वीडियोस होनी चाहिए और क्या बेहतर लगता है आपको, क्या इजी वे है, तो उसके बारे में वीडियोस मैं कलेक्ट करके और उसकी कंक्लूजन जो है वो आपके सामने रखा करूँगा कि क्या चीज़ बेहतर है और क्या नहीं। आज की वीडियो है कि हाउ टू कैलकुलेट कैलोरीज इफ़ यू वांट टू लूज़ योर वेट। आपने वेट कम करना है तो कैसे कैलोरीज कैलकुलेट करेंगे। तो ये वीडियो है वो एक इंटरनेशनल कोच की है और उसने बड़ी सिंपल वे में बताया है कि कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी कैलोरीज अगर आपने वेट लूज़ करना है। तो स्टार्ट करते हैं, जिसमें उसने आप वो जो बता रहा है वो बता रहा है वेट लूज़ करने के लिए। तो इसमें सिंपल सा एक मेथड है कि उसने 3 चीज़ों में डिवाइड किया है कि फर्स्ट 2 चीज़ें जो हैं वो तो सिंपल हैं कि कैलोरीज़ आपने कितनी इंटेक करनी है रोज़ की, और जो सेकंड है वो ये है कि आपकी रोज़ की प्रोटीन इंटेक क्या होगी। तो दोनों में इतना कोई डिफरेंस नहीं है। कैलोरीज ओवरऑल होती हैं कि भी आपने क्या करना है, और प्रोटीन जो है वो आपके मील्स के हिसाब से होंगी कि पर मील में आपने प्रोटीन कैसे डिवाइड करनी है। तो पहले सिंपल आप ये वे समझ लें कि आपने रोज़ की इंटेक कितनी करनी है कैलोरीज़ की और प्रोटीन की। तो नेक्स्ट स्टेप जो है वो कि कैसे आपने डाइट प्लान मैनेज करना है, कैसे आपने वर्कआउट मैनेज करना है, तो वो सारी चीज़ें साथ साथ लेके चलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं वीडियो। What's going on, guys? Welcome back to the channel. This is my 858th take that we've done, so hopefully this is the final one because I keep messing up. Either way, I'm going to show you your weight loss calorie calculator so you know exactly how many calories you need to eat in order to lose fat quickly, but more importantly, sustainably over the long term. I'm also going to show you exactly how much protein you need so you can maintain your muscle and build strength while you're losing fat. And finally, please do not skip this section because it's super important, and I know there are going to be some people who have questions, and I'm going to answer it right here. So please make sure you watch the whole video. If you have any questions, let me know. Thumbs up if you liked it, subscribe if you don't already. Let's get into it. First thing that I'm going to do is show you exactly how many calories you should be eating for fat loss. But really quickly, if you've been on this channel for a while and you've seen my work, you know I have another video that already discusses this. The issue is it's an 18-minute and 40-second video, and I've found out through years of doing this that some people just are not willing to watch an 18-minute and 40-second video. So बता दूं कि वीडियो में मेन चीज़ जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन मुझे कह रहा है कि मेरी एक 18 मिनट्स की वीडियो है जिसमें मैंने डिटेल में सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं, लेकिन क्योंकि वो एक लॉन्ग वीडियो है तो आपका टाइम बचाने के लिए और कंक्लूजन बताने के लिए कि आप कैसे इजीली इसको लेके चल सकते हैं और इन डेप्थ में जाने की बजाय आप कैसे सिंपल वे में इसको लेके चल सकते हैं। तो आई विल चेक दैट लेटर और चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। The same information, just condensed. If you want to know more about why I'm doing certain things and have more questions, definitely go watch the other video. The link is in the description. But purely what this video is the what. Exactly what to do in order to hit the right amount of calories, what to do to hit the right amount of protein.
That's it. Any other questions, make sure you watch the other video, linked in my description, because I explain it more in full. All right, so with all that said, I'm gonna show you how to find out how many calories you should be eating for fat loss. And some people are gonna say, that seems way too simple, and I'm gonna say try it because it works really, really well, all right? The first thing you're gonna do is take your goal body weight, which, by the way, that's what I discussed here. So if you have questions on why I'm saying goal body weight, watch this section first. You're gonna take your goal body weight in pounds, not in kilograms or anything else. So make sure you convert to pounds first, and you're gonna multiply by 12. So it's actually gonna look like this. Goal body weight by 12. So if we're gonna take an example, let's just say your goal body weight is 150 pounds. Here's what it would look like. So if your goal body weight is 150 pounds, you multiply by 12, your daily calorie intake would be 1,800 calories, and that is your calorie deficit. Now, again, I know some तो फर्स्ट जो स्टेप है वो ये है कि उसने GBW से रिप्रेजेंट किया है गोल बॉडी वेट। गोल बॉडी वेट वो होगा जो आपने एक अपना गोल रखा हुआ है कि आपने कितना बॉडी वेट अपना एक अचीव करना है। अगर आपका वेट फ़र्ज़ करें 200 पाउंड्स है और आपने 150 पाउंड्स करना है, तो आपका गोल बॉडी वेट होगा आपका 150 पाउंड। केजीज़ में आपका वेट होगा, सारों को पता होगा, लेकिन उसको पाउंड्स में कैसे कैलकुलेट करना है बहुत सिंपल तरीका है कि आप गूगल पे जाएं और लिखें कि केजीज़ टू पाउंड, और केजी से आप उसको पाउंड में कन्वर्ट करें, और जो आपके पास पाउंड में वेट आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय आपने 12 करना है, तो जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो आपकी कैलोरीज इनटेक होगी पर डे के हिसाब से। people are going to be like, that is way too simple, that's not going to work. And other people are going to be like, that's way too many calories. I promise you, it works, and it works very well as long as you're consistent with it. And that means that you do it every day consistently for 30 days, 60 days, 90 days. You don't do it for 4 days and then eat 500 calories more and then say, oh my God, I fucked up, and quit and binge out for a whole weekend. That's not being consistent, okay? Do that consistently for at least 30 days. I guarantee you this works. Again, if you have questions about it, number one, I'm gonna talk about goal body weight here, and I discuss it way more in depth in the video linked in my description. This is just a very basic, very simple calorie weight loss calculator. Now, what about your protein intake? This is even more simple. Every day, you're gonna take your goal body weight, and you're gonna multiply it by 1. So it would look like this. Goal body weight in pounds multiplied by 1. So if we're using the 150 pound example again, 150 times 1. I'm not a mathematician, but I believe that. सेकेंड स्टेप में उसने ये किया है कि हाउ टू कैलकुलेट प्रोटीन इनटेक। तो सेम वही तरीका है कि गोल बॉडी वेट को आपने मल्टीप्लाई बाय जो आपके पाउंड्स में है उसको मल्टीप्लाई बाय 1 कर दिया है, तो जो रिज़ल्ट आएगा वो आपका होगा प्रोटीन इनटेक पर डे। तो इसमें यह है कि वो कह रहा है कि कुछ लोग कहेंगे ये बहुत सिंपल तरीका है, लेकिन कुछ लोग कहेंगे ये तो मतलब पर डे बहुत सारी कैलोरीज हैं। कह रहा है कि मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आप इसको कंसिस्टेंट लेके चलें 30 to 60 डेज़, तो आपको इंशाल्लाह मतलब रिजल्ट्स नज़र आएंगे कि उसने जिस बेस पे कैलकुलेट किए हैं और नहीं किए। 150 grams every single day. Now, some people are going to say, that is so much protein. That's like a lot of protein. If you think 150 grams of protein is a ton and you don't know how you could ever possibly reach that, either you've never tracked protein and you don't know how easy it is to do, and or your diet has way too many carbs and fats and not enough protein. It's actually very, very simple to do that. Not easy, but simple, and a simple shift in your diet, usually just incorporating protein at every meal, is easy enough to make that happen. And again, I know some people are gonna watch this and say, that's way too simple, that's way too many calories, he doesn't know what he's talking about, blah, 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 and that's totally fine. But I promise you, if you give this a shot, it is going to work. And like I said before, I have a separate video on this that's 18 minutes and 40 seconds. There's a lot more to talk about. I left a lot out specifically for the people who might just want the quick and easy. This is all you need to know. I also attach the link in description जो 18 मिनट्स की वीडियो बता रहा है। तो अगर किसी को ये चीज़ समझनी हो कि उसने किस बेस पे और किस लॉजिक पे उसने मल्टीप्लाई बाय 12 किया और मल्टीप्लाई बाय 1 किया है विद बॉडी गोल बॉडी वेट 150 पाउंड्स जो उसने लिया है, आपका गोल बॉडी वेट कुछ हो सकता है 200 पाउंड्स हो सकता है, आपका गोल बॉडी वेट 100 पाउंड हो सकता है। तो मतलब डिपेंड ऑन योर गोल्स, आप डिपेंड ऑन योर हाइट और आपको जो गोल बॉडी वेट बनता है। वो कह रहे जिसने इसकी डिटेल्स देखनी है वो 18 मिनट्स की वीडियो है, उसमें एक एक चीज़ उसने मेंशन की हुई है, तो वो देख सकता है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। जो ज़्यादा डेप्थ में जाना चाहता है और सारी डिटेल्स देखना चाहता है वो ज़रूर देख सकता है। This is the need to know basis for your weight loss calorie calculator. But if you want to know more about the why and the science behind it, click that
Click that link in the description so you can learn more about it. With that said, let's get to the last section. I almost left this part out and just kept this in the other video because I do talk about it there, but I think it's really important because a lot of people have questions about goal body weight. The thing that is very important for you to know is that when I say goal body weight, and the reason I put it in air quotes, is because it doesn't have to actually be your goal. You don't actually have to weigh that amount in order to succeed. When I say goal body weight, a lot of people talk about lean body mass, all right? And that's my version of goal body weight. And especially when we're working with people who might not know what lean body mass or LBM is, and they just don't do the calculation at all, goal body weight is a really good example of what you might weigh at your leanest, which is why it's a really good calculation to use. For example, a lot of people will use just body weight. They won't use the goal body weight part, which is fine. And I actually used to use body weight, but if you are a very, very, very high body fat percentage and a lot to lose, if you're using your current body weight, odds are you're gonna be eating way too many calories or way more than you actually need in order to see significant progress. So I prefer the goal body weight. So the conclusion is that he's trying to say बॉडी वेट है फॉर एग्जांपल 200 पाउंड्स और आपने आना है 150 पाउंड्स पे, एकदम से आपका बॉडी वेट नीचे नहीं आएगा या एकदम से कम नहीं होगा। तो आपने ये नहीं देखना कि यार मुझे मतलब आना 150 पे है लेकिन मेरा 180 पे वेट रुक गया है या मेरा 190 पे वेट रुक गया है। अगर आपको रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं उस पर तो आपने उस पर कंसिस्टेंट रहना है और उस पर आपको रिज़ल्ट्स मिलेंगे। और कंफर्म नहीं है कि आपका 150 पे ही वेट आए तो आपको एक ड्रीम बॉडी फिज़िक मिलेगी और आप उसी पे अच्छे लगेंगे। मे बी आपको 180 पे, मे बी 170 पे, 160 पे, 165 पे किसी भी पाउंड पे जो वेट है आपको उस पर अपनी फ़िज़िक अच्छी लग सकती है कि यार अपने आप को अच्छा महसूस कर रहा हूँ और ये मेरी फ़िज़िक यहाँ पे आई एम गुड टू गो। सो यू कैन कंटिन्यू ऑन दैट थिंग्स और आप उसको मेंटेन रख सकते हैं और लाजमी नहीं है कि आप 150 पे ही आएँ तो आपका बॉडी वेट तो ही आपका गोल अचीव होगा। आपका मेन मकसद है कि आपने फ़िट नज़र आना है, आपने एक्टिव नज़र आना है, तो वो किसी भी वेट पे हो सकता है। और जब तक आपको रिज़ल्ट्स नज़र आ रहे हैं तो वेल एंड गुड। अगर आपको रिज़ल्ट्स नज़र नहीं आ रहे तो आप देखें कि कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हैं। आपने कैलोरीज़ इनटेक नहीं ठीक ले रहे, आप 3 दिन ले रहे हैं, आप चौथे दिन 5वें दिन स्किप कर रहे हैं, तो वो चीज़ें इसमें शामिल हो जाती हैं। फिर आपने उन चीज़ों पे इन डेप्थ जाना है। तो ये सिंपल तरीका था हाउ टू कैलकुलेट कैलोरीज़ फॉर योर डेली कंजम्पशन एंड हाउ टू कैलकुलेट प्रोटीन इनटेक। तो ये मेन चीज़ें हैं 3 पॉइंट्स। अब ये सिंपल एक कैलोरीज़ आप कैलकुलेट करने का तरीका है। उसके बाद पर मील आपने कैलोरीज़ कैसे कैलकुलेट करनी है। आपने वेट गेन करना है तो आपका मील्स कौन से होने चाहिए, आपने वेट लूज़ करना है तो आपके मील्स कौन से होने चाहिए। ये सारी वीडियोस मैं डिटेल में मेंशन करूँगा इंशाल्लाह। और आपने कमेंट्स में मुझे बताना है कि किस टॉपिक को मैं कवर करूँ। क्वेश्चन आपके हों आप वो पूछ सकते हैं और एनीथिंग यू वांट। सो थैंक्स फॉर टाइम। आई होप यू लाइक दिस वीडियो and thank you so much for watching. Keep watching. Allah Hafiz.